Hello students, how are you? I hope you all are well. Students, we will run chapter number 14. That is class graphs. That is graphs. Now class, let's start the chapter. Read the following graph where time is plotted in seconds and distance in meters. Class, distance in meters and time in seconds. Okay. And answer the following questions. और हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है क्लास. What does the graph show? क्लास ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पर ये इतने डिस्टेंस में इतनी सेकंड को हमने कवर किया है. ओके, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड. 6 सेकंड में क्लास हमने 6 ही मीटर को डिस्टेंस को ट्रेवल किया है. अंडरस्टैंड? नाउ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके क्लास, नाउ रेने डेस्क्राइट्स was a French philosopher and writer whose work La Geometrique allows the algebraic equations to be expressed as geometric shape 2D coordinate system that was named after him. Okay, he is credited as the father of analytic geometry. Class क्या कहते थे उनको हम? Father of analytic geometry. Now he actually merged and the algebra with the Euclidean geometry in honor of Descartes. The system used to describe a point in a plane is known as Cartesian system. We saw that a number line can be used to locate the position of a point. Class, हम number line का use क्या करते हैं? To locate the position of a point. But in some situation, a single point is not sufficient to locate a position. Class, उसके लिए कभी-कभी ऐसा होता है कि सिंगल पॉइंट सफिशिएंट नहीं होता अपनी लोकेशन को लोकेट करने के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टू वॉच अ मूवी. प्लस कभी आप मूवी देखने के लिए गए हैं एंड व्हेन यू वांट टू लोकेट योर सीट, और आप अपनी सीट को लोकेट करना चाहते हैं. यू आस्क अबाउट अ प्लेस और थिंग और इंफॉर्मेशन लाइक वेदर द सीट इज इन द अपर हाफ ऑफ द होल और इन द मिडल ऑफ द रूम एक्सेट्रा. अंडरस्टैंड? टू लोकेट द एग्जैक्ट पोजीशन. क्लास, एक एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए प्लेस और ऑब्जेक्ट टू नंबर लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टू नंबर लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर are needed so that the position of a point can be started relative to the other. A French mathematician, class, René Descartes 1596 to 1650 came with such a system known as the Cartesian or coordinate system to describe the position of points and lines in a plane. Okay, coordinate class axis. Coordinate axis in the Cartesian coordinate system, the horizontal line, the horizontal number line, horizontal class होती है x axis. क्लास क्या होता है? ये x axis होता है हमारा. Now and the vertical number line class ये y axis होती है. Understand? When drawn perpendicular to each other are called coordinate axis. क्लास हम एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ ऑरिजिन, द पॉइंट वेयर बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट. जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है? ऑरिजिन होता है. ओके, एंगल इज कॉल्ड द ऑरिजिन. इट इज डिनोटेड बाय O. ओके, कार्टेशियन प्लेन क्लास, द प्लेन इन विच टू नंबर लाइन इंटरसेक्ट. टू नंबर लाइन क्लास इंटरसेक्ट हो रही हैं each other at right angle is called the Cartesian plane. Understand? Now quadrants, the coordinate axis divide the Cartesian plane into 4 equal parts known as quadrants. These are numbered as quadrants: third, first, second, third and fourth in the counter clockwise direction. That is class x o y 1, y o x second, third and fourth. Now class, locating a point on a Cartesian plane, to locate coordinates of a point we should follow these steps. Class, हमें इन steps के according उनको करना है. Step 1, draw perpendicular line on the given point to axis and y axis. Step 2, count the number of units of y axis as a distance from 0 to the point where the perpendicular meets x axis. Step 3, count the number of units of y axis as a distance from 0 to the point where the perpendicular meets y-axis. Step 4, write the coordinate obtained as ordered, where A represents x coordinate and B represents y coordinate. Understand class? See,
Some solve examples. Example, locate the position of A, B, C, D on Cartesian plane class. क्लास हमें लोकेट करना है, ये हमें दिया हुआ है. ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस क्लास एंड वाई एक्सिस respectively. See A, that is A, B, C and D. Understand? The perpendicular of a point I meet x is at 4. क्लास ये कहाँ पर मिल रहा है? A 4 पर. Understand? At 1 respectively. Now, so the coordinates of A क्या हुआ क्लास? 4 हुआ और 1 हुआ. Similarly, other points have been found as below. क्लास यहाँ पर ये 4 -4 और 3. Understand? Points दिया हुआ है क्लास. Number of units from 0 in x-axis, number of units from 0 to y-axis coordinates. Class C, B, 2, 3. C का हुआ 3, 2, -3, 2. B, 3 और 4. Okay. Now class from the location of the point, we also conclude that class C, यहाँ पर plus plus plus, minus plus minus plus, minus 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 minus, plus minus minus plus. Okay. C. क्लास हम रिमेंबर भी देख लें. कोऑर्डिनेट फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट. क्लास फर्स्ट हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं एंड थर्ड इज आल्सो नेगेटिव. ओके. Plotting points on Cartesian plane, that is class to plot a point on a Cartesian plane, follow these steps. Step 1, draw two perpendicular line using an appropriate scale on a graph paper which intersect each other at O. Mark the horizontal line x-axis and vertical line y-axis, number the squares as per the scale chosen. Step 2, locate the quadrant of x coordinate from the ordered pair. Move to the required number of units from 0 to the x coordinate. Step 3, locate the quadrant of y coordinate from the ordered pair. Move from the point on x coordinate to the direction of y coordinate and mark a point when the required coordinate is reached. Okay. Step 4, label the point as the ordered class. उसको label करेंगे. Ordered pair AB, where A class क्या represent कर रहा है? X और B y coordinate को represent कर रहा है. Example, plot a point L 3 3 on a Cartesian plane. Now draw two mutually perpendicular lines and label them. Classes को label करेंगे and locate the coordinate of x, that is 3. Class, that is 3 and 3 is positive. It lies in quadrant 1. Class ये कहाँ lie कर रहा है? Quadrant 1 में. Move 3 units from 0 to 3. That is class 3 in 1 quadrant, first quadrant. Locate the quadrant of y. अब क्लास y में देखते हैं हम. That is 3. Since 3 is positive, it lies in coordinate first 2. Again 2 में आया. That is move 3 units above 3. Make a point. Okay. यहाँ पर क्लास हमने क्या किया? एक point बनाया and then join किया उसको. That is label कर दिया 3 3. Come on exercise 14.1. Question number 1. Plot the following points on the graph sheet. Class, आपके पास ग्राफ पेपर होगा. That is class x and y. Okay. Like this we have to make. Okay. Now, okay. Now अब हम क्या लिखते हैं क्लास यहाँ पर? Now -1, -2, -5, -6, 7, -8, -9. Okay. Now similarly, ओके. माइनस माइनस. नाउ यहाँ पर पॉजिटिव होता है क्लास. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Now here is also positive. अंडरस्टैंड. नाउ क्लास उन्होंने बोला -3 और -5. एक को हम लेंगे -3 और -5. तो -3, यस क्लास,
-3 एंड -5। अंडरस्टैंड क्लास, ये कहाँ लोकेट कर रहा है? एक्स में और इसमें, अंडरस्टैंड, वाई में। नाउ -2 और 4, अब क्लास यहां से लेंगे -2 एंड 4। अंडरस्टैंड क्लास, ये हमने लोकेट किया था ए को एंड, अंडरस्टैंड क्लास। Plus rest of the parts do yourself. Come on, question number 2. Plot the points A 2 3, B 5 3, C 5 5, D 2 5 in a graph and verify if they lie on a line. If they lie on a line, class. Yes, class C. Class, I will tell you this here. Okay. 2 or 3. Class 2 and 3. 8 point. Now 5 3. क्लास इसी तरह से आप अपने पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड क्लास। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू 4 5 एंड 5 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट व्हिच दिस लाइंस मीट्स। क्लास किस पे वो मीट कर रही हैं? दैट इज 4 5। क्लास 4 एंड 5, 4 एंड 5। तो क्लास ये कौन सी लाइन पे मीट कर रही है? दैट इज, यस क्लास, हियर। ओके, तो एट 9 एक्सिस। ओके, ऐसी क्लास हम 5 4 को देखेंगे यहाँ पर 5 एंड 4, 5 एंड 4। अंडरस्टैंड क्लास? Rest of the questions do yourself. Come on, construction of graph and its application. Construction of graph and its application. After the given points are plotted on the Cartesian plane, they can be joined to construct the graphs. Okay, let us construct a simple graph given by equation y is equal to x plus 2. We ordinarily substitute different values of x into the equation to get the corresponding values of y. The table gives a list of ordered pairs of coordinates 3 5 2 4 1 3 0 2 and so on. Each of these ordered pairs satisfy the equation y is equal to x plus 2 plus c. Y is equal to x plus 2. These points are then joined together, which gives a straight line. This straight line is the graph of the equation y is equal to x plus 2 plus c. ये जो स्ट्रेट लाइन है क्लास, ये इक्वेशन दे रही है y is equal to x plus 2. Perimeter versus length of square. We know that the perimeter of square is equal to 4 times its sides. 4 into side class, p is equal to 4s. Let us draw the graph by using the equation. We arbitrarily substitute the values of s into the equation to find the corresponding values of p as given. Class C. This table gives a list of ordered pairs of coordinates 2 8 3 12. Draw the graphs for these orders. क्लास अगेन हम एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे दैट इज यहाँ से क्लास 1 4, तो 1 and 4. Understand? 2 8. Now 2 8 will come here 2 and 8. Understand? Now 3 12, 3 and 12. Understand? Now come on, solve examples. Quantity versus cost of graph. Example number 1. Work at the following table which gives the quantity of petrol and its cost. Number of liters of petrol class this. Cost of petrol in rupees this. Now plot a graph to show this data. The points are 10,500, 15,750, 20,000, 21,000, 25, 1250. Now class, let us take substitute suitable scale. Class हम एक suitable scale लेंगे. Okay, on the both the axes mark the number of liters along horizontal axis and post the petrol along vertical axis. This and this. And the plot these points. Join the points. What do you find from the graph? Class हमने इन points को join किया है यहाँ पर. Understand? In the graph a straight line, you will find the graph is a straight line and called a line graph. हम इसको क्या कहते हैं? Line graph. Time versus distance graph. Example number 2 class. Amit travels some distance by his car from the house at the following times as
क्लास से 6 am पे 40 डिस्टेंस, 7 am पे 80, 8 am पे 120, 9 पे 160. अब क्लास हमें plot a graph to show this data. Let us take a suitable scale on the graph and make time on horizontal axis and distance on vertical axis. Plot the points. क्लास हमने पॉइंट्स को प्लॉट किया 640, 640, 780. Understand? And then हमने अपनी लाइन को स्ट्रेट किया. Okay. Join the points by looking at the graph. We find that cars cover the distance of 20 kilometer. That is 120 kilometer minus 100 kilometer, 7:30 am to 8 am. ठीक है. Come on. Exercise 14.2, question number 1. The following table gives the quantity of petrol and its cost. क्लास हम यहाँ पर लिखेंगे. Yes, class C. 500, 1000, 1500, 1000, 500, 300, 3000, 3500, and just last 4000. There is cost and here will come quantity. Yes, class. So class, now quantity 30, 35, 45, 5 and 6. Okay class. Now class, यहाँ पर 30 में class 1800. So I will the class 1800 क्या होगा, यहाँ पर छोटा सा इसके सेकेंड लाइन में होगा. That is class I will put the point here. Okay. Now 2100. Now class 2100 होगा 2000 से थोड़ा सा ऊपर, just one line ऊपर. Okay. 45 class 27, 2500 से थोड़ा सा ऊपर, 2 lines up. Class, in your graph copy there is too much lines like this, so you will count. Now 3600 class, that is here. Okay. Now 170 class, 5 के लिए 170 will come here. Okay. Now 204 come like this. Okay class, यहाँ पर हम कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? लाइक दिस. हम यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ओके क्लास. तो क्लास अब हमने इसको ग्राफिकली इस डाटा को क्या किया है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया. अंडरस्टैंड क्लास? रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डू योरसेल्फ नाउ क्लास. Your chapter is completed. Prepare it very well and we will meet you in next class.